Good evening, subscribers, viewers, and students. Like every single time I make a video, I tell you that you are going to learn things in a different way. वो सब बातें जो आप सोचते हैं, जो आप अपनी रेगुलर लाइफ में बोलना चाहते हैं इंग्लिश में, because you speak these in Hindi, Punjabi, in your local languages, but you find yourself to be little unable to speak these in English, वो सारी मैं आज आपको बताने जा रही हूँ. उनमें से मैक्सिमम लाइक दिस इज़ अ कॉमन हैबिट ऑफ आवर्स टू से ओके जो खरीदना है खरीद लो, खर्चे को गोली मारो. तो बाय वॉट यू हैव टू बाय. व्हेन वी से गोली मारो, people out there in England, America say hang the expense, and hanging is फांसी देना. So they are not saying कि खर्चे को फांसी दे दो, but they want to say don't bother about the expense. So buy you what you have to buy, hang the expense. The meaning is don't worry about the expense. And sometimes we see two things to be quite similar, like two twin brothers, twin sisters, but they are different by nature. In the sense उनकी नेचर्स अलग होती हैं, बट वो वैसे सेम होते हैं, देखने में सेम होते हैं. So we should say they are like chalk and cheese. Now chalk and cheese, if are kept at distance, they appear to be the same. So they are like chalk and cheese. Remember this. And then comes the time when you cry, you feel nervous, you feel sad, you feel guilty, and you change your expressions. Or if you feel scared, डर में, रोने में, गुस्से में हमारे एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं. एंड इट हैपन्स umpteen टाइम्स दैट यू से टू योर रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, आप उनको बोलते हो चलो पहले अपना मुंह ठीक करो, चलो पहले अपना लुक्स ठीक करो, चलो चलो अपना फेस नॉर्मल करो. सो दिस काइंड ऑफ नॉर्मैलिटी और नॉर्मलसी दैट यू वांट टू ब्रिंग टू देम और टू देयर फेस, यू शुड से compose your features. Compose your features. This is what you have to bear in mind. They are like chalk and cheese. Hang the expense and compose your features. Remember this. कभी कभी हम बहुत सो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डीप स्लीप में सोते हैं. And we should be saying I slept like a log. हिंदी में बोलते हैं मैं घोड़े बेच के सोया. बेसिकली घोड़े बेच के सोना इज़ बहुत बेफिक्र होके सोना, एंड बहुत डीप स्लीप में सोना. सो आई स्लेप्ट लाइक अ लॉग. नाउ इफ आई एक्सप्लेन, लॉग इज द थिक स्टेम ऑफ द ट्री, द बेसिक स्टेम ऑफ द ट्री, नॉट द बाउज एंड द ब्रांचेज. मैं उसकी शाखाओं की बात नहीं कर रही हूँ. व्हेन यू सी अ हैवी लॉग यू कैन नॉट मूव इट. आप उसको ऐसे ही हाथों से नहीं हिला सकते. दैट मीन्स यू स्लेप्ट लाइक अ पर्सन हु कैन नॉट बी अवेकन्ड. यू कैन नॉट अवेक सच अ पर्सन हु कैन नॉट बी अवोकन, आई शुड से. एंड देन देर आर टाइम्स व्हेन वी से मैं तो पैदाइशी ऐसा ही हूँ, मैं तो शुरू से ऐसा हूँ, मैं शुरू से ऐसी हूँ. आई एम बॉर्न दैट वे, आई एम बॉर्न दैट वे, मैं तो ऐसा ही हूँ. So I slept like a log. मैं घोड़े बेच के सोया. Yes, it reminds me of something else about sleeping. मैं बिल्कुल नहीं सोया. जब आप बिल्कुल भी नहीं सोए, I did not sleep a wink. Wink is not a very heavy word. Wink is like one eye is closed and the other is open. It does not again imply कि आप एक आंख बंद करके सोते हैं. द मीनिंग इज मेरी ज़रा भी आंख नहीं लगी. आई डिड नॉट स्लीप अ विंक. द सेम स्लीपिंग रिमाइंड्स मी ऑफ मैं पूरी रात जागा, मैं पूरी रात जागी. तो आप पूरी रात जाग रहे हैं, दैट मीन्स आई हैड अ वाइट नाइट. नाइट इज़ नॉट वाइट, नाइट इज़ ब्लैक. बट because you remained awake, because you were looking at the ceiling, or you I should say you tried to rise from your bed and you turned on the light, you went to another room and you tried to make your night white. So I had a white night. हम में से कितने लोग हैं जो बोलते हैं मैं इसमें फेल हो गया, मैं मैथ्स में फेल हो गया, मैं हिस्ट्री में फेल हो गया. फेल होना इज़ लाइक असफल होना, दैट इज़ आई फेल्ड इन मैथमेटिक्स. बट फनीली एट टाइम्स वी स्पीक मैं मैथ्स में उड़ गया. तो दैट उड़ना
There are so many things we use this word of Hindi in. One is उड़ना, the bird flies, उड़ता है. The other is रात को इन्वर्टर उड़ गया और मैं सो नहीं पाया. तो that is different, and you flunked in some exam is different. So you noticed that I spoke the word FLUNK. I flunked in mathematics. But मेरे घर का इन्वर्टर उड़ गया, जनरेटर उड़ गया, तो the inverter conked out. Did you notice I said the inverter and the generator? Try to cultivate a habit of seeing the difference or speaking even differently when it comes to THE. Is the or the? It is the when it is followed by a vowel. जैसे A, E, I, O, U sounds देने वाले, not just देखने में, sounds भी आती हों like ice cream. This is the ice cream. This is the upper floor, the afternoon, the evening, but the morning, the basement. This is what I was trying to say. So the and the are different. अब पागल हो गए हो क्या? हम बहुत बोलते हैं लोगों को. हिल गए हो क्या? सरक गया क्या? Are you out of sorts? SORTS. Have you gone barmy? BARMY. Do you remember in one of my lectures last time I had told use your loaf. भेजा इस्तेमाल करो. क्या आप जनरली हम लोग ओपन में नहीं बोलते, बट व्हेन इट कम्स टू स्लैंगिश काइंड ऑफ थिंग वी जनरली से हैव यू गॉन बार्मी. खाने की बात होती है, एक मदर होने के नाते मैं बोलूँगी, खाने की बात होती है तो मैं बोलती हूँ पेट भर के खाओ. एंड नॉर्थ इंडिया में जनरली देसे रज के खाओ, तसल्ली से खाओ, पेट भर के खाओ. डोंट ब्रिंग द वर्ड स्टमक ओवर हियर. पेट भर के खाओ मीन्स जी भर के खाओ मीन्स ईट टू योर फिल. FILL. ईट टू योर फिल, दैट मीन्स जी भर के खाओ. बट डोंट पिग आउट. पिग आउट इज बहुत ज़्यादा खाना, घप घप करके खाना और बहुत ज़्यादा खाना. डोंट पिग आउट. डोंट हॉग, HOG. स्टॉप हॉगिंग. मैंने डोंट बोला ज़रूर है, बट आई जनरली आस्क पीपल टू अवॉइड डोंट एंड यूज स्टॉप. Like since childhood we have been listening to our teachers. They used to say stop writing, your time's up, exam ho gaya, stop writing. But stop is not just for writing or stop talking to me, or somebody is coming to your house and you are saying yes, you want to say to your friend pagal mat bano. So don't be silly, which is quite cliche, जो बहुत common है. If instead of this you say stop being silly, it looks all the more good. It looks all the more impressive. एक और बहुत important बात, somebody is praising you in crowd. This is what my mother generally does in front of our friends. And I say, don't do this in front of your friends. Especially when I am standing in front of you or I am sitting over there. तो उससे क्या होता है, आप थोड़ा सा शर्मिंदा सा फील करते हैं. आपके ही सामने आप ही की तारीफ क्राउड में हो रही है तो यू फील ओहो, यू स्टार्ट फीलिंग एम्बैरेस्ड. व्हाट एग्जैक्टली वुड यू से टू दिस? डोंट स्पेयर मी ब्लशेस. ठीक है, सॉरी, इफ़ यू से आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, हाँ मत करो इज़ फॉर डोंट, बट आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, यू आर स्पेयरिंग मी ब्लशेस. And interestingly, we can even say my blushes, BLUSHES. I'll give everything in description. एक क्विक रिविजन कर लेते हैं. खर्चे को गोली मारो, हैंग द एक्सपेंस. मैं बहुत ज़्यादा बुरी तरह से सोया, आई स्लेप्ट लाइक अ लॉग. वो दोनों देखने में सेम हैं बट बहुत अलग अलग हैं. दोज टू सिस्टर्स और ब्रदर्स आर लाइक चॉक एंड चीज़. अपना फेस ठीक करो पहले, रोना धोना बंद करो और फेस ठीक करो. कंपोज योर फीचर्स. मैं पैदाइशी ऐसा ही हूँ, आई एम बॉर्न दैट वे. पेट भर के खाओ, ईट टू योर फिल. शर्मिंदा मत करो इतनी प्रेज कर कर के, आप कर रहे हो. यू आर स्पेयरिंग मी ब्लशेस. सो व्हेन यू, आप पागल हो गए हैं क्या? हैव यू गॉन बार्मी? व्हेन यू वांट टू स्पीक थिंग्स दैट यू स्पीक इन हिंदी, you should be speaking in English too. My channel's name is English Differently by Mrs. Batra.
काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कीप लर्निंग थिंग्स दैट यू हैवंट बार्गेंड फॉर। इसका मीनिंग है जो आपने इमेजिन भी नहीं की हैं, यू हैवंट बार्गेंड फॉर, जो आपने सोची भी नहीं है। पीपल गो बाय वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, यू विल बी लर्निंग न्यू थिंग्स in every video of mine. Thank you so much.